Assalamu alaikum dear students. In today's lecture, we are going to discuss basically the hegemonic states, their detailed knowledge, what are the criteria to become a hegemon, and we are also going to discuss different hegemonic states throughout the history. Similarly, what is Thucydide trap, and at the same time, we are also going to discuss hegemonic stability theory. What is the criteria to become a hegemon? So this is all about these basic questions. As I have already mentioned in my previous lecture that hegemon is a state that is necessary to produce a world order. So what is the basic criteria to become a hegemon? I have mentioned that the country which is going to be a hegemon or status quo, actually it should be an economic power. The second point related to the second criteria to become a hegemon, it should be a military power. It should have its own political system. The third point, it should have its own political system. And the last point, it should have a very soft image throughout the world. It should have the world should consider the hegemon as a soft power. It should not consider it as a hard power. Right now in the world, America is a superpower. There are different terms. For example, status quo, we can say America is a status quo in the current world scenario. At the same time, China is a revisionist power. वो स्टेट जो हमेशा एक किसी स्टेटस को चैलेंज करने के लिए इमर्ज हो, द स्टेट विच इमर्ज जस्ट टू चैलेंज द status quo, actually it is known as a revisionist power. So China and Russia, basically these are two states that are going to challenge the America. The challenge may be of political system. For example, the American system is liberal democracy. On the other hand, the system of the China is an authoritarian state, and it is considered by most of the social scientists that authoritarian states are basically more stable in comparison to that of those states that are following liberal democracy. So why is it necessary to have a hegemon in the world system? What are the reasons? Why is it necessary to have a superpower in the world system? Actually, there are multiple reasons to have a hegemon in the world system. The first main reason, it is necessary for the development of the economic relations between country. ये बहुत सारे मुल्कों के दरमियान इकोनॉमिक रिलेशंस डेवलप करवाने के लिए ज़रूरी है. अगर कोई हेजमॉन नहीं होता तो कंट्रीज के दरमियान इकोनॉमिक रिलेशंस अच्छे एस्टेब्लिश नहीं हो सकेंगे. उनके ऊपर चेक एंड बैलेंस कोई नहीं होगा. देयर विल बी नो चेक एंड बैलेंस एट डिफरेंट कंट्रीज. अगर उनके ऊपर चेक एंड बैलेंस नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली वो पैरासाइटिक स्टेट्स बन जाएंगी. वो हर एक चीज अपने मुल्क में लाना चाहेंगी और इसका नतीजा क्या होगा? द वर्ल्ड पीस विल गेट डिस्टर्ब. सो इट इज नेसेसरी to have a hegemon in the world system to establish a good economic relation between different countries. Similarly, in the absence of such a system, there is a difficulty in the sustainment of economic relations or economy. For example, जब एक स्टेट दूसरी से मिसाल के तौर पे कोई कर्ज लेगी तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट कि वो दोबारा उसे वापस करे. अगर वो स्टेट जिसने कर्ज लिया वो बोले मैंने वापस नहीं करना तो क्या होगा? ऑटोमेटिकली उनके दरमियान वार होगी और वार का नतीजा क्या होगा? पीस डिस्टर्ब होगा. पीस डिस्टर्ब होने से क्या होगा? लोग आपस में मरेंगे, भूख अफलास का आलम होगा. तो ऑटोमेटिकली आपको किसी भी सिस्टम को सस्टेन करने के लिए एक सुपर पावर की जरूरत होती है. सो इन द करंट वर्ल्ड सिनेरियो दैट इज अमेरिका.
So similarly, it will provide the world with public goods and collective good. ये दुनिया को collective goods और public good provide करेगा. At the same time, मिसाल के तौर पे अगर दुनिया में किसी जगह डिजीज कंडीशन आ गई है, जिस तरह कोविड-19 आया था, तो इसकी इकोनॉमी स्ट्रांग होगी. जैसा कि क्राइटेरिया टू बिकम अ हेजमॉन में सबसे मेन पॉइंट क्या था कि इट शुड हैव अ स्ट्रांग इकोनॉमी. जिस वक्त उसकी इकोनॉमी स्ट्रांग होगी, ऑटोमेटिकली उसने दुनिया को प्रोवाइड करना है कि भाई मैं आपकी मुश्किलात हल करने के लिए रेडी हूँ. आई एम हेयर टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स. सो फॉर एग्जाम्पल, कोविड-19 आया, अमेरिका ने थ्रू आउट डिफरेंट कंट्रीज को एड प्रोवाइड की. एंड व्हाट वाज द पर्पस ऑफ दैट एड? So that those countries which don't have a strong economy, they should stabilize themselves in this tough time. So polio, cancer, and it will also provide scholarships to different countries so that their students can get the opportunity to learn. Similarly, it also prevents from free riding.